Recently gave CDC Pro 7 and scored 26 marks. Around 18 marks in VARC and 7 marks in quants and a 0 in what DILR. तो बेसिकली DILR में मैं एक भी सेट सॉल्व नहीं कर पाया एंड दैट वाज लेटर आई नोटिस द मिस्टेक. गलती मेरे से ये हुई थी कि उसमें एक सेट दो सेट एक्चुअली में बहुत अटेम्प्टेबल थे, बट आई पिक्ड अप वन सेट जो मेरे को लगा मैं फॉर श्योर सॉल्व कर दूंगा. उसमें प्रॉब्लम ये हुई कि व्हेन आई पिक्ड अप द सेट इन CDSE Pro 7 में जो सेकेंड सेट था, तो उसको मैंने लिखा. तो जब मैंने वहाँ से चार इन्फॉर्मेशन उतारी अपने शीट रफ शीट पे, तो उसको मैंने गलत उतार लिया. तो फिर अब उसी बेसिस पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ और बहुत ऑब्वियस चीज़ें दिख रही हैं और वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फिट ही नहीं हो रही है एंड आई वॉज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड. सो फिर मैंने दोबारा देखा तो आई रियलाइज माई मिस्टेक. मैंने दोबारा नोट किया एंड इन नोटिंग अगेन आई मेड अ मिस्टेक. So it's kind of just I was trying to solve and I freaked out. Freaked out in the sense I knew कि ये ख़राब कर दिया मैंने. So nothing can happen here. Talking of QA, it was very doable. I felt around 8 to 9 questions of arithmetic and maybe 1 or 2 questions of algebra were attemptable. Not attemptable, I mean doable from my side. But I attempted 7-8 questions, got 3 correct and 5 wrong, 4 or 5 wrong. And when I analyzed, तो 4 और 5 में हुआ क्या था एक्चुअली में, आई थिंक इट इज़ ऑल कैलकुलेशन मिस्टेक और रीडिंग मिस्टेक. या तो मैंने जो क्वेश्चन पढ़ा है इन दैट आई हैव मिस समथिंग, और आइदर व्हेन आई एम नोटिंग डाउन थिंग्स एंड डूइंग इट, तो आई हैव डिड अ वेरी सिली कैलकुलेशन मिस्टेक. वेरी सिली कैलकुलेशन मिस्टेक लाइक 6 into 3 is 18, I have written it 9. So that is very silly mistake which you cannot afford, especially at this point of time of preparation. And that's kind of basically presence of mind, I would say, in that particular zone when you are giving the mock. And talking of VARC, so VARC I have had nightmares about. कभी score was around 20 is have been constant उसी के आसपास. बट इन लास्ट 4 और 5 मॉक्स, मतलब CDC Pro 7 को मैं छोड़ दूँ, तो आई वॉज गेटिंग सिंगल डिजिट स्कोर. So that was very devastating. So at least this mock, when I scored 18, it's not very good score. 18 is not a good score, to be very honest. But at least I'm okay कि चलो ठीक है, I'm single digit से हम 18 पे आए and I kind of analyzed it. And to be very honest, in VRC I have not done much. मतलब ना तो मैंने बहुत ज़्यादा reading की है, but I have solved around, I should say, maybe 50 RCs in my whole preparation. So I've not done much for VARC because I just haven't done. But I'm taking next 2 months very seriously and trying to practice as much as I can to get to get to the skill that is actually needed to ace the VRC section. तो ये एक rough video, एक rough update of how the overall CDC Pro 7 was and how preparation in general is going. So I hope this video was of little value to you guys because I feel बहुत ज़्यादा मतलब negativity, not negativity, I would say kind of a very stressing situation happens when you do not score, because I myself tend to feel very demotivated. मतलब किताब उठाने का मन नहीं होता उसके बाद, but you have to go and pick up the book and start learning again and try to find your mistakes and maybe try to do better. So that's what I would say to you. ठीक है, जो हो गया सो हो गया. Just kind of see where you made the mistake, then take it, try not to make that mistake in the next mock, and yeah, kind of just do that. Maybe things might get better. Maybe. I'm hoping so. Thank you so much, guys. Bye bye. Take care.